हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2025 और 26 के लिए लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। तो आंसर को किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है तो इसको हम लाइव यहाँ लिखेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है 2025 वालों को भी, 2026 वालों को भी। अगर किसी ने आंसर राइटिंग शुरू नहीं की है तो इन वीडियोस जो सीरीज़ है उसको देख सकता है और उससे बहुत ज़्यादा उसे आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आंसर को शुरू करना है। बाकी ये टॉपर्स की कॉपी है, इनको ज़रूर देख लेना। एंड क्वेश्चन है हमारा, वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस वंस थॉट एंड बिहेवियर। 125 वर्ड में लिखना है। ये ACPPSC मेंस 2025 टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये टेस्ट सीरीज़ है। 18 जनवरी को ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये 6 बैचेज़ हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप ये देख लेना प्रेडिक्शन 102 क्वेश्चन जो हैं वो प्रिडिक्ट हुए थे। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, किस तरीके से जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन है वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होते हैं और आप उन टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन से किस तरीके की हेल्प ले सकते हो। तो ठीक है, हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन कभी भी मोनोटोनस मत रखना, कोशिश करना कभी कोई कोट यूज़ कर लो, इनडायरेक्टली चीज़ों को यूज़ कर लो, इस तरीके से चीज़ों को आप रखने की कोशिश करना। तो क्या है, एटीट्यूड and character are two words that appear similar in sense. Attitude is influenced and driven by our temperament, character and personality. Character could be described as you when no one is ठीक है। वीकनेस इन एटीट्यूड or in other words, having a negative attitude weakens your कैरेक्टर। ये आपने जो कोट है उसको जस्टिफाई कर दिया। फिर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस one's thoughts and behavior. ठीक है, यहाँ आप डायग्राम बना दो। बिहेवियर, थॉट्स, बिलीफ, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, फीलिंग इमोशनल। फिर इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? वन, moral force, Gandhiji's
negative attitude towards violence helped mobilized mass against colonial government. Build resilience. 12 boys and their coach were able to survive for days without food in cave in Thailand. Uphold traditional practices. Touching feet of elders. नेगेटिव इफेक्ट क्या है? स्टबर्न एटीट्यूड, जिन्ना refusal to come to terms with Congress led to partition. Racial attitude result in social radicalization. Racial targeting of Indians in USA, Canada. और क्या हो गया? Trauma can result from effective attitude. Example, among victims of child abuse. अब क्या कंक्लूजन लिख देंगे? Everyone's life has ups and downs, but how one responds to them decides where they end up. So having correct attitude may result in happiness in
पर्सनल रिलेशन एंड पीस इन पब्लिक लाइफ। देखो ये हमने आंसर लिख लिया है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमने इसमें डायग्राम को इंट्रोड्यूस किया, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। देखो अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं भी आती और आपने ये लाइव आंसर राइटिंग के 10 वीडियोस देख लिए तो आपको आंसर राइटिंग करना आ जाएगा। तो ये वेट मत करो कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो, ये सारी चीज़ें आप जो है टॉपिक एक टॉपिक को कवर करते रहो और अपने आंसर राइटिंग को कवर करते रहो। ये 18 जनवरी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो और टॉपर्स की कॉपी देख लेना और ये लाइव आंसर राइटिंग को देख लेना, और सिर्फ इतना आप कर लो और आपको आंसर राइटिंग जो है करना आ जाएगा। लिखो, रोज़ लिखो, कुछ गलतियां करोगे हम उसको सुधारेंगे। आप लाइव आंसर राइटिंग से भी मुझे लगता है बहुत कुछ सीख रहे होगे और इस तरीके से चीज़ों को देखो। बहुत सारे आपके वीडियोज़ हो चुके हैं लाइव आंसर राइटिंग के, और आपने अगर वो सारे वीडियोज़ भी देख लिए, मुश्किल से अगर आपने 10 वीडियोज़ भी देख लिए तो आप बहुत अच्छे जो है कमांड पालोगे आंसर राइटिंग में। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। थैंक यू।